Hello everyone. Welcome back again at the Rise of Hopes. Yes learners, this side Neelam Kaidan and you are watching Vocab. For building up your English language, this is a foreign language, we are here again. So we will learn some advanced use of English and some simple use. Simple, as you know, that we are using daily, but in spite of using very simple language, we want to use that kind of phrases and the idioms which can make our language much better. Okay, so for that we are here. We will learn, first of all, I'll tell you about the advanced phrases and those advanced phrases which we are using in our daily use, means that is very simple. For example, the first one is hand on. What does it mean? It means the practical experience. Suppose ki I am saying that in teaching I am hand on. It means I have practical experience in teaching. Second है hands down. लगता हमें क्या है? These are very simple. Hands on, hands down. No. Hands down means undoubtedly, बिना किसी शक के. Like Virat Kohli is hands down the best cricketer. विराट कोहली बिना किसी शक के हम कह सकते हैं दैट इज द बेस्ट क्रिकेटर. नेक्स्ट वन इज अंडर कंट्रोल. जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो है अंडर कंट्रोल. और अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहेंगे देन हैंड्स इन. तो हम कैसे कह सकते हैं? वी कैन यूज दिस फ्रेज इन अ सेंटेंस like this time COVID pandemic is in hand. We want to say that COVID pandemic is in under control now. Next one is worked up. Worked up means angry. हम simple कहते हैं कि मैं कहना चाहूँ कि वो बहुत एंग्री है और हम पर चिल्लाया. तो हम कैसे कह सकते हैं? He is worked up and shouting on us. बहुत गुस्से में है और हम पर चिल्लाया. नेक्स्ट है टू कैच ऑन. टू कैच ऑन मीन्स टू अंडरस्टैंड. ओ आई कैच ऑन दिस मैटर वेरी इजीली. इस मैटर को मैं बहुत अच्छे से समझ गया. अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड. तो अंडरस्टैंड की बजाय आप क्या यूज कर सकते हैं? टू कैच ऑन. आई कैच ऑन दिस मैटर अनडाउटली. नेक्स्ट वन इज डेड टायर्ड. जब हम कहते हैं कोई काम करते करते थक जाते हैं, आई एम वेरी टायर्ड. So in spite of saying this very simple sentence, we can say that I'm dead tired. So dead tired, oh बहुत थक गए हैं. Next one is die out. Die out is the disappear slowly. धीरे धीरे गायब हो जाना. जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो फॉग हो जाती है बहुत, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे फॉग हटने लग जाती है. तो हम कहते हैं कि दैट फॉग इज डिसअपियरिंग स्लोली. बट इन स्पाइट ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट fog is died out slowly. Next one is down to earth. Down to earth means very practical. Means like my father is a very practical man. अगर हम कह सकते हैं कि बहुत practical है, means according to the situation, वो उसके अनुसार चलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि my father is a down to earth man. बहुत practical है. Next one is mixed up. Mixed up को हम क्या कहेंगे simple language में? We will say that mixed up means get confused. Like मैं बहुत जल्दी confused हो जाता हूँ, कोई कहना चाहता है. I got confused very easily, कोई कह रहा है. इसकी बजाय हम क्या कह सकते हैं? We can say that I got mixed up very easily or I got mixed up very quickly. बहुत जल्दी से. Next one is to cheer up. To cheer up means to become happy. Learners, always try to be very happy. Learners, always try to cheer up. Okay, I hope that you have learned some these 10 phrases, advanced phrases, and you will build up your language much better than earlier. Thank you so much, and for getting such more videos, subscribe to the channel. Always stay connected, keep learning. Thanks for watching.